स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्या स्ट्रक्चर्स है, क्या फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन्स का। प्लाज्मा प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन इज थिन, बहुत पतली है। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, प्रेजेंट इन ऑल यूक्रियाट, तमाम यूक्रियाट एंड प्रोक्रियाट सेल्स में मौजूद है। दैट फॉर्म ए बाउंड्री बिटवीन द सेल, ये बाउंड्री बनाते हैं सेल की एंड इट इन्वायरमेंट और इसके माहौल के दरमियान, एंड रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ मटेरियल्स, और रेगुलेट करते हैं फ्लो ऑफ मटेरियल इन टू एंड आउट ऑफ सेल, इन अंदर और बाहर सेल के। ये जो है सेल मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन प्रोटीन की ये डायग्राम है। उसके बाद सेल कंटेन एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ऑल मॉलिक्यूल, सेल कंटेन करते हैं अप्रोप्रिएट अमाउंट में तमाम मॉलिक्यूल्स को within them to function effectively, function जो है effectively. So this plasma membrane act as a semi permeable membrane, ये जो है plasma membrane act करते हैं semi permeable membrane के, allowing the entry and exist of certain material, entry और exist करते हैं certain materials को. It is like a guard at a gate, ये जो है act करते हैं गार्ड एट गेट, गेट के ऊपर, गेट कम्युनिटी के ऊपर, हु इंस्पेक्ट दोज हु इंटर एंड लिव, ये इंटर होते हैं और लिव करते हैं, टू मेक श्योर दैट ओनली पीपल्स एंड थिंक, ये यकीन दहानी करते हैं पीपल और थिंक नीडेड इन द कम्युनिटी आर देयर, कम्युनिटी हैं आर देयर. उसके बाद प्लाज्मा ब्रेन वाटर सॉल्युबल्स मॉलिक्यूल्स है, पानी को हल करने वाला मॉलिक्यूल्स, फेट सॉल्युबल्स मॉलिक्यूल, ये जो फेट सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स है, और ये चैनल प्रोटीन है. डिफ्यूज अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन होना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के गिर. उसके बाद जो है द सेल मेम्ब्रेन वाज डिस्कवर्ड बाय ए स्विस botanist Carl Nageli and C. Karmer in 1855 decides the existence microscope from 1600. No one thought that the cell membrane existed. कोई नहीं जानता था कि सेल मेम्ब्रेन एग्जिस्ट हुई है, बिकॉज ऑल द could see was the cell wall, क्योंकि इन्होंने देखा था सेल वॉल को. क्रिल नेगिलिया एंड Karimer noted that the surface of cell was not continuous, surface जो है सेल की continuous नहीं, and that it was impermeable, और ये जो है impermeables हैं to pigment added to the solutions around the cell, pigment add होते हैं solutions around the cell, cell के. उसके बाद history. They also found that the protoplasmic surface was most dense. Protoplasmic surface जो है बहुत ज़्यादा dense और viscous गाढ़ी है when compared to the cytoplasm. Compared इसे कहा जाता है cytoplasm के. They called this surface as the plasma membrane. इस surface को कहा जाता है plasma membrane. History of study on plasma membrane, the first insight into chemical nature of the membrane. ये जो है chemical nature है membrane की was obtained by Ernest Overton in 1819 as he knew that the non-polar solute, इसे जाना जाता है non-polar solute के dissolved very easily in non-polar solvent than polar solvent, non-polar solvent or polar solvent, and the polar solvent had the opposite opposite इसकी solubility. So he realized that the substance entering the cells had to be dissolved in the outer boundary, dissolved होते हैं outer boundary of cell is due to lipid. उसके बाद Arbenz Langmuir in 1917, during his research in Nature of Oils Flame, found that the membranes was made of monolayer of lipid, and they were arranged vertically with hydrocarbon chains away from the water and carboxyl group in contact with the surface of water. This finding was a key in understanding the lipid bilayer and cell membrane structures.
The two Danish scientists E. Gorny and F. Grendel